अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो इस लैब में हम लोग जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ही एक एप्लीकेशंस में से जो है वो एक एप्लीकेशन देखने वाले हैं जिसमें इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर है। तो जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देखा था जिसमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और वोल्टेज फॉलोअर थे। तो सिमिलरली ये इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर सर्किट ज़्यादा हद तक जो है वो सिमिलर ही होते हैं आपके इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह ही होते हैं। सर्किट्स वैसे ही हैं बट कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग हमें करनी पड़ती है उन सर्किट्स में। तो वो हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम्स हैं जिसमें इंटीग्रेटर सर्किट्स हैं और डिफरेंशिएटर सर्किट है, उसके साथ उनकी आउटपुट वेव फॉर्म और इनपुट वेव फॉर्म अपनी क्या करनी है, कौन सी अप्लाई करनी है और किस तरह से आपको आउटपुट मिलेगी। सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके पास जो ऑप एम्प यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसमें इनपुट कहाँ पे आपने अप्लाई करनी है। तो यहाँ जो हमारे पास इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन्स हैं इस ऑप एम्प की, उसमें से नॉन इन्वर्टिंग पिन को मैं ग्राउंड कर दूंगा और इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन को ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, जो इनपुट सिग्नल हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं वो इन्वर्टिंग पिन पे थ्रू रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस में जो इन्वर्टिंग रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सिमिलर है आपके इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड हो रही है जो कि फीडबैक कैपेसिटर है, जो कि पैरेलल होगा आपके फीडबैक रजिस्टर के। तो यहाँ पर सिर्फ अगर आप देखें तो जो अपनी इनपुट अप्लाई करनी है ये इंटीग्रेटर की तरह वर्क कर रहा है। जो आपके मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिस तरह आप कैलकुलस में उसको यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर, तो ये सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी वो ही यूज़ होगा। तो यहाँ पे आप अगर आप स्केयर वेव इसको इनपुट पे देंगे तो आपको ये ट्रायंगुलर वेव देगा, और अगर आप साइन वेव इसको अप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से आपको कोसाइन वेव की आउटपुट देगा। तो ये एक स्मॉलर सा चेंज है यहाँ पर जिसमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर, जिसके अंदर आप कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एम्पलीफायर है आपके पास जो आप यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो सिमिलरली इन्हीं स्टेप्स के ऊपर अगर आप देखें कि एक डिफरेंशिएटर को कैसे बनाया जाता है। डिफरेंशिएटर जो आपके पास चेंज जहाँ पे होगा उसके हिसाब से आपको जो है वो आउटपुट पे शो करेगा कुछ ना कुछ वेव फॉर्म। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास डिफरेंशिएटर है और वो भी हम लोगों ने सेम सर्किट जिस तरह यूज़ किया है इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिस तरह डिज़ाइन किया था उस तरह ही यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग पिन को ग्राउंड कर देंगे, अप्लाई वोल्टेज करेंगे आप डीसी वोल्टेज को 7 एंड 4 पिन पे, एंड देन जो पिन 2 है जो इन्वर्टिंग पिन है उसके ऊपर आपने थ्रू कैपेसिटर, इन्वर्टिंग कैपेसिटर मीन्स दैट कि इन्वर्टिंग पिन के ऊपर आप कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं और जो वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे VI इनपुट्स वोल्टेज होंगे आपके। तो इसमें अगर आप देखें तो फीडबैक रजिस्टर है और उसके साथ आउटपुट आपको V0 6 पिन पे मिल जाएगी। यहाँ अगर आप लोग जो इनपुट अप्लाई करते हैं वो स्केयर वेव है लेट्स सपोज, तो वो चेक करेगा कि रेट ऑफ चेंज कहाँ पे आपके पास चेंज आ रहा है। तो यहाँ से 5 वोल्ट से जो एज आ रहा है 5 वोल्ट से नेगेटिव 5 वोल्ट पे जब वो मूव करता है तो उसके ऊपर आपके पास वहाँ पर एक स्पाइक मिल जाती है। सिमिलरली जब नेगेटिव 5 वोल्ट से 5 वोल्ट के ऊपर अगर आपका सिग्नल मूव कर रहा है तो यहाँ पर बहुत एब्रप्ट चेंज आ रहा है, तो इसलिए वो एक स्पाइक दे रहा है वहाँ पर। अगर ये कॉन्टीन्यूसली चेंज आ रहा होता है आपके सिग्नल के अंदर तो उसके लिए कोई वो वेव फॉर्म आपको वहाँ पर मिल रही होती है। तो ये हमारे पास जो बेसिक सर्किट्स हैं। तो अगर हम लोग इनको प्रैक्टिकली करना चाहें तो कुछ और भी चेंजिंग करनी पड़ती है इन सर्किट्स के अंदर। तो वो हम लोग फर्स्ट प्रोटियस पे देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, एंड देन फिर उसका हार्डवेयर डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं साथ में ऐड कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका प्रोटियस मॉडल है जिसमें मैंने यहाँ अगर आप देखें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेते हैं इस सर्किट से जो कि हमारे पास इंटीग्रेटर है, और यहाँ आप देखेंगे कि कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग है आपके प्रीवियस सर्किट्स के अंदर। वो ये है कि आप पिन 3 को डायरेक्टली ग्राउंड नहीं करके इसके लिए आप
10 किलो ओम का एक रजिस्टर के थ्रू आप उसको ग्राउंड करें। और सिमिलरली जो आपके पास बाकी सर्किट सेम ही होगा, जिसमें आप 15 के का रजिस्टर इन्वर्टिंग इनपुट पे अप्लाई करें, एंड देन कैपेसिटर 0.01 माइक्रोफैरड एंड 470 किलो ओम का आपने फीडबैक रजिस्टर यूज़ करना है, तो 6 पिन पे आपको आउटपुट मिल जाएगी। तो जो इनपुट सिग्नल यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया है, अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ, तो ये इनिशियल वोल्टेज -1 वोल्ट, ये मैंने पल्स ली है एक, और उस पल्स के अंदर इनिशियल वोल्टेज -1 वोल्ट हैं, पल्स के हाई वोल्टेज जो होंगे वो 1 वोल्ट हैं, राइज टाइम एंड फॉल टाइम मैंने 1 माइक्रोसेकंड सेट किया है। फ्रीक्वेंसी पल्स विड्थ जो रखी है 50% ड्यूटी साइकिल जो आपका होगा वो 50% है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज़, एंड देन आप इसकी आउटपुट को अब ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू ऑसिलोस्कोप। सेम सर्किट यही आपने फॉलो करना है और इसके आउटपुट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ रन कर लेते हैं, एंड देन डिजिटल ऑसिलोस्कोप हेयर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं लेट्स सपोज इसको अगर मूव करूँ डाउन हियर, और यहाँ आप देखेंगे कि जो आपने इनपुट येलो वन जो है वो हमारी इनपुट सिग्नल था, तो उसके ऊपर जो है हमारे पास ट्रायंगुलर वेव यहाँ पर जनरेट हो रही है। सिमिलरली आप यहाँ पे साइन वेव भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और उसी को फिर आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो उसकी आउटपुट आ सकती है, को साइन वेव कैसे बनेगी, इनको कंपेयर करके आप देख सकते हैं दो चैनल्स के ऊपर ऑसिलोस्कोप के। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि अब आप डिफरेंशिएटर को डिज़ाइन करें, तो डिफरेंशिएटर के लिए कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है प्रैक्टिकल सर्किट के अंदर। वो एक तो आपके पास आप फर्स्ट जो मेन है सर्किट, उसमें कि आप इन्वर्टिंग पिन के ऊपर कैपेसिटर को लगाएं और फीडबैक के अंदर आप रजिस्टर लगाएं, और बट यहाँ ये हो रहा है कि हम लोगों ने एक 150 ओम का रजिस्टर यूज़ किया है इन्वर्टिंग के ऊपर, पिन के ऊपर ही, और सिमिलरली एक कैपेसिटर को भी यूज़ किया है फीडबैक के अंदर, ताकि इसकी आउटपुट ज़रा फाइन और ज़रा अच्छी आ सके आपके पास। सो उसके लिए क्या हो रहा है कि आप इसकी जो इनपुट बनती है वो आप इनपुट इसी सिग्नल की जो ट्रायंगुलर वेव जो आउटपुट पे आ रही है, पिन नंबर 6 पे मैंने ये अप्लाई किया, आप इसको यहाँ पर फंक्शन जनरेटर के थ्रू भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग इसको जो है वो इसकी आउटपुट इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसकी आउटपुट हम लोगों को मिलती है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सो डिजिटल ऑसिलोस्कोप ये देख सकते हैं आप। तो जो आपने सिग्नल सेंड किया था, सेम सिग्नल जो है वो स्केल वेव वाला ही आपके पास जनरेट हो रहा है। अगर आपने ट्रायंगुलर वेव इनपुट बना दी डिफरेंशिएटर की, तो आपको वही स्केल वेव जो आपकी थी वो ही मिलना शुरू होगी। इसके अंदर ये हो रहा है कि वो आपका देख रहा है कि रेट ऑफ चेंज कहाँ पे हो रहा है, कितना हो रहा है, उसके लिहाज से जो है वो आपके पास आउटपुट जनरेट हो रही है। और हम लोग इसको सेपरेटली भी करके देख सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं यही सेम स्केल वेव अगर अप्लाई करूँ डिफरेंशिएटर की इनपुट पे, तो मुझे स्पाइक्स मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ से इस इनपुट के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, और देन फिर इसको रन करते हैं, एंड देन डीबग डिजिटल ऑसिलोस्कोप ये। तो इसको थोड़ा सा मुझे 1 वोल्ट पे सेट करना पड़ेगा, या 0.5 वोल्ट स्केलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी आउटपुट है वो एज इट इज़ हम लोगों को मिल रही है। सो इन्वर्टिंग पिन थी, तो जब आपका नेगेटिव एज होगा तो उस पर आपको पॉजिटिव स्पाइक्स, एंड जब पॉजिटिव एज है तो उसके लिए आपके पास नेगेटिव स्पाइक मिल रही है। तो ये हमारे पास इसका प्रोटीज का जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन था, जिसके सर्किट्स वेरीफाई करने थे कि आपके सर्किट वर्किंग है और ये प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। तो अब इसका जो हार्डवेयर डिमॉन्स्ट्रेशन है वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसके अंदर आपको डीसी स्प्लिट सप्लाई कैसे बनानी है, और उसके साथ साथ में जो है इस सर्किट को आप कैसे ब्रेडबोर्ड पे पैच करेंगे, जिसकी आउटपुट्स को कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। Assalamualaikum students. So in this lab we will discuss
Next topic, basically it's lab 12, and in lab 12 we will see the another application of op-amp, which is integrator and differentiator. Okay, so the circuit is basically very similar, very similar to our last lab, in which we have discussed basically the inverting and non-inverting amplifier. So first of all, we are going to make the op-amp basic circuit. So here we have an inverting pin, non-inverting pin, and we have one resistor here, and here it's ground, and we are going to apply an input signal at inverting pin. Okay, the specification of our input signal is basically 0.5 volt V peak, means the 1 volt V peak to peak, and 1 kilohertz, and the inverting resistance value, which is basically 15k. And in the last lab we have seen that how feedback resistor will affect our gain. So here we will use one feedback resistor, which value is basically 470k, and here the pin numbers, the 7, 4, 2 and 3, these are the pins. Pin number 2 is inverting, 3 is non-inverting, 7 pin is used for plus 15 volts, 4 pin is minus 15 volts, and here the 6 pin is basically used for the output. So this is basically our inverting amplifier. So how we can make integrator from this inverting amplifier? By just adding a one capacitor parallel to this RF capacitor, RF resistor. So the value of this capacitor is basically CF, which is 0.01 microfarad, or 103. Okay, so here this is our basic integrator circuit. The next most important thing here, the IC pins. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 7, 4, 1, and here it's top side. So it's basically a simple circuit, but in practice, when you performing this circuit in your lab, so you need to add one more resistor in non-inverting pin here. You don't need to ground this, you just need to add one resistor. This is basically a practical circuit, which is equal to 10k. So the input of this signal of this circuit is basically a square wave, and you will get the output like a triangular wave. So here we have a hardware circuit here, in which we have an op-amp 741, the feedback capacitor, and here we have a 470 kilo ohm resistance. It's
Third is basically 10 kilo ohm resistance, which is connected to non-inverting pin, and then ground. And there is another resistance 15k. Now we are going to apply an input here. It's our input signal, which is connected to our function generator. Scale wave with 1 kilohertz frequency and 1 volt V peak. Then we have to connect this input signal to an oscilloscope. So here you can see that we have a scale wave, the input signal which we have generated. One another thing here you must know about this, basically the DC split supply here. First of all, you need to create a plus 15 volts and minus 15 volt to operate your op-amp. For this you need to make the split supply. For this you have 4 terminals here. Red, black for one supply and red and black for the another supply. You need to connect the black and black for the first supply and the red from the second supply. This will make the ground here, and this is your negative 15 volts, and here this is your plus 15 volts. Now you can see the output here in the oscilloscope. The first channel here, the green signal, is basically your input signal, and the second one is your triangular wave. It's output signal. We can see that our integrator circuit works perfectly here. Okay students, here we have another circuit here. It's basically a differentiator. So here we have an input signal is 0.5 volt V peak. It's basically, you can set the input signal, the triangular or sinusoidal signal, or scale wave. We can apply at the input of the differentiator. So here we have inverting resistance here is 150 ohm, and similarly we have capacitance value here is 0.01 microfarad. It's at the inverting input terminal. And if you see that basically we have a feedback resistance is 1.5k, and similarly 0.01 microfarad capacitor is attached at the feedback, because in practical lab we have to add one capacitor in the feedback, otherwise we cannot get the desired output. So the circuit is very similar to the integrator, but only one capacitor we have to connect at the inverting input. So similarly at the same point we will again set the circuit here. If you see here, we have an op-amp here. This is our op-amp. This is our 0.01. Its another value is basically 103, or we can see it's 0.01 microfarad here. So here we just need to connect 0.01 microfarad with pin number 6 to pin number 2. And another resistance is basically 1.5k. It's a 1.5k resistor is connected parallel to this capacitor. Now if you see at the inverting input here, there is another capacitor is basically 103, which is connected to pin number 2, and its other end is connected to resistance here. This resistance is basically a 100 and this is 50 ohm. So the total resistance is here a 150, because I
place it both of the resistors in series, so the total resistance will be 150 ohm. So the input is applied from the function generator. Here you can see that the function generator, from the function generator I have set the triangular wave with a 1 kilohertz frequency and 1 volt V peak voltage here. Now for the practical circuit, as in the previous circuit in the integrator, we have connect a resistor between pin number 3 to ground. So similarly here we also connect this resistance. Now similarly apply the DC voltage, means the DC split supply you have to set, then apply the plus 15 and minus 15 volts, plus 15 at pin number 7 and minus 15 at pin number 4. Now make a common ground here for your input and output and your DC supply. Now observe the output at pin number 6. Now you can see the output here. The first channel is the green is your input signal, and the yellow one is basically the output signal. So here if you see that here when the input signal decrease from its positive peak to negative peak, we will get the output for that specific period. We will get the output positive because it's inverting pin, because we have applied the input signal at inverting pin. Now similarly from negative peak to positive peak of the triangular signal, we will get the negative voltage for the square wave. Now we are going to set the input signal here, the square wave. If we first we set the sine wave, the differentiation of sine wave is basically the cosine wave. Now set the sine wave here and you will get the cosine wave. Okay, now we are going to set the input signal here, square wave. You will get the spikes. Oh, it's triangular, not square. Now this is square, and now here we will get the spikes for every transition. Okay, so here for the positive edge we will get the negative spikes, and for the negative edge we will get the positive spikes, just because of that we applied the input signal at inverting pin. So that's our lab 12, basically integration and differentiation is mathematical operation basically here. So it's the end of lab 12.